Today I am going to talk about a few medicinal plants of India. My name is Pritpal Singh and I will make series of many medicinal plants. Okay, right? And we have the first plant Ocimum sanctum. This is a very short video only about this plant, right? The another video I will make very soon on the next medicinal plants. These are about 45 to 50 plants. Okay, so let's start. Osmum sanctum. This is a very common plant which is found in India normally. इसकी जो स्पीशी है ना, नॉर्मली तुलसी का प्लांट हर घर में आपको मिल जाएगा, राइट। एंड जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, जो कि बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर बॉटनी स्टूडेंट्स. ओके, द फैमिली लेबिएटी, as you can see here, I will zoom out. You can see here family lebiati, then the name Tulsi, sacred Basil is the English name. Description, right, it's a well-known sacred plant in India and it is a medicinal and aromatic herb. Grows up about 75 centimeter. जिसकी morphology है, that is a leaves opposite margin tooth and flower small purple in a cluster and small fruit small होते हैं, yellow or reddish, right. Now the main part is active constituent which are used act as a medicines: eugenol, methyl eugenol and caryophyllene, right. So the which parts are used, especially leaves, seeds and roots. These are used. The first one we have leaves. How leaves are used? Leaves and roots are used in the form of powder or even in the decoction form, right. The leaves used as expectorant. एक्सपेक्टोरेंट का यहाँ पे मीनिंग क्या है? जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को साफ़ करने में हेल्प करता है, जो म्यूकस होता है उसको हटाने में मदद करता है, स्पेशली यूज्ड इन एस्थमा. एंड डायफरेटिक का मीनिंग होता है जो हमारे स्किन पोर्स होते हैं उनको ओपन करने में मदद करता है, हमारी स्वेटिंग को, हमारे पर्सपिरेशन को इंक्रीज़ करता है. ओके. एंटीबायोटिक, इट स्टॉप द रिकरेंस ऑफ डिजीज़ लाइक फीवर, अगेन एंड अगेन होता है, बार बार होता है, तो उसको स्टॉप करने में हेल्प करता है. इट सिंपली यूज इन कोल्ड एंड कफ. As I told earlier, it is very useful in bronchitis and asthma, right. Seeds are used as demulcent, like it act as a glycerin during the blisters. जब मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं ना, ब्लिस्टर्स का मीनिंग छाले होता है, तो जब मुंह के अंदर जो अंदर वाली लेयर होती है उसमें ब्लिस्टर्स होते हैं, तो उसको स्मूथ करने में, उसको रिलैक्स करने में इसके सीड काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड एज डाइजुरेटिक. डाइजुरेटिक का मीनिंग होता है इट इंक्रीज द यूरिन फ्लो एंड यूजफुल इन द कंप्लेंट ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन. इट इज़ यूज्ड इन द क्योर ऑफ किडनी स्टोन्स और इन द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन्स को ब्रेक करके उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है. ओके, थ्रू द नेचुरल मेथड. एंड रूट इज़ यूज्ड, द डिकॉक्शन ऑफ रूट, जिसको डिकॉक्शन को हम सिंपली काढ़ा कहते हैं, राइट. जो इसका काढ़ा होता है ना उसको यूज़ किया जाता है. डायफरेटिक मीन्स जैसे मलेरिया में बार बार फीवर होता है ना, उसको स्टॉप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसका काढ़ा, और मलेरिया में काढ़ा इसका दिया भी जाता है. द paste of whole plant, that is a paste of especially its leaves, are used in snake bite and scorpion sting. It was used in the ancient time, but these days allopathy is especially used for snake bite and scorpion sting, obvious. So this was the most important things about Ocimum sanctum. This is a chemical structure. You can see eugenol and methyl eugenol. So
This was very short video, and I will make next video on another very important medicinal plant. Just stay with this channel and keep watching, and thank you all.